we have started our parental products, and from that we have seen few important points. We have started our parental products. We have seen different type of injections, different type of injections. We have seen different types of route of administration and their usual volume of injection. We have seen this. We have seen this introduction part. We have seen the excipient used in the parental products. Excipients are important. Excipients are very important. We have also seen the vehicles used in the parental products. Mostly three type of vehicles are used. Aqueous vehicle means waters, non-aqueous vehicle, water immiscible solvent like other organic solvents, and then water immiscible solvents like oils. And what is the main important criteria? They must be pyrogen free. So pyrogens, what are they? Pyrogens are nothing but the metabolic product of your bacteria. Okay, mostly they are the lipopolysaccharides in nature. They might be carbohydrate or peptide or lipid. तो pyrogen सिर्फ लिपोपोलिसेकेराइड नहीं होते. pyrogen आपका pyrogens जो है वो प्रोटीन भी हो सकता है. pyrogens can be lipids, pyrogens can be a carbohydrate, but mostly they are the lipopolysaccharide. Mostly they are the lipopolysaccharide. Now, as I told you last time, there is a question: pyrogen can be destroyed by heating the container with the 210 degrees Celsius for 3 to 4 hours. If you heat the container, dry heat, okay, pyrogens can be destroyed by heating the container at a 210 degrees for 3 to 4 hours, or heating the container 650 degrees Celsius for. So normal autoclaving temperature does not destroy the pyrogens. Normal अगर autoclave करेंगे pyrogens destroyed नहीं होते. We have seen this. We have seen that water polymerization and sterile water polymerization standards pH होता है 5 to 7 and conductivity is not more than 1.3 microsecond per centimeter for both. Okay. Conductivity is the most commonly used method for checking the purity of water. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Conductivity method is the most commonly used method for checking the purity of water, right? Then solid content, again important, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. Solid content of sterile water polymerization 10 ppm, not more than 10 ppm. Solid content for sterile water polymerization is always higher than solid content for water polymerization. Water polymerization का solid content होता है 10 ppm, वाटर पोलराइजेशन का सॉलिड कंटेंट होता है 10 ppm, स्टेराइल वाटर का होता है 20 to 40. क्यों भाई? क्योंकि ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, सो ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन देयर इज अ लीकेज ऑफ कंटेंट फ्रॉम द वेसल एंड दैट्स व्हाई मोर सॉलिड कंटेंट इज परमिटेड फॉर द स्टेराइल वाटर पोलराइजेशन. आपको याद रखना है एंड ऑक्सीजन लिमिट दोनों के लिए सेम है 0.25 एंड ऑक्सीजन यूनिट पर ml. देन pyrogens need not to be required, need not to be, this water polymerization need not to be required pyrogen free. वाटर polymerization में pyrogen हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, but sterile water polymerization must be pyrogen free. Sterile water polymerization must be pyrogen free. Water polymerization में हो सकता है, नहीं हो सकता है, not required to be pyrogen free. And water polymerization, if prepared, it is immediately used. It should not be stored more than 24 hours. And if you want to store, you have to store at the temperature less than 5 degree or more than 80 degree. We have seen the method of preparation. Method of preparation के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Sterile water polymerization और water polymerization they are made by distillation and reverse osmosis. को याद रखना है distillation and reverse osmosis. But purified water is made by distillation ion exchange. ये यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम. मेथड तो सेम ही है बाकी. We have also seen excipient used in the parenterals. So antimicrobial preservative we have seen in the detail. Stabilizers we have seen. Then we have seen also this was last slide. We have seen the antioxidants. Antioxidants, once again I would like to revise. Antioxidants used in the parenteral. Antioxidant मतलब क्या है? These are the agent which will prevent the oxidation of drug and will prevent the deterioration of drug. Right? So they will prevent the oxidation. Suppose आपने parenteral product store किया, उसके ऊपर लाइट गिरा तो that will cause photo oxidation. अगर आपका पेरेंटल प्रोडक्ट है उसमें कोई रिएक्टिव जो होता है फ्री रेडिकल वो जनरेट हो गए, पेरोक्साइड आयंस या फिर कोई मेटल आयंस, दैट मेटल आयन विल कॉज
oxidation. That peroxide will cause oxidation. So to prevent the oxidation, so antioxidants are used. They are of three categories. तो पहला होता है antioxidant which are acting as a reducing agent. Reducing agent कौन है? So reducing agent means they will get oxidized in place of drug and they will prevent the oxidation of the drug. So ascorbic acid, sodium metabisulfite, sodium bisulfite, they are nothing but the reducing agent. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. Then antioxidant may be second category. They will also block the oxidative reaction known as chain termination. So by blocking the oxidative chain reactions, which will not usually get consumed in the reaction. So ascorbic acid is the BHT, BHA and tocopherol. So vitamin E वाला जो antioxidant है वो क्या है? It will break the oxidative chain reaction. याद रखना mechanism के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. What is the mechanism for BHT as an antioxidant? उसका mechanism है it will block the oxidative chain reaction. Okay, oxidative chain reaction. Third में आता है chelating agents, and chelating agents are nothing but they will form a complex with the catalyst. जैसे for example, if catalyst is a heavy metal ion है तो उसके साथ में coordinate complex बना के उसको inert करते हैं. Ethylene diamine tetraacetic acid, EDT, in this concentration. Synergistics, they will enhance the effectiveness of your antioxidants. So phosphoric acid, tartaric acid and citric acid. We have seen this in the previous lecture. Now next is very important again. Am I audible to you clearly? अभी ये जो part है important part है again. Types of glass as per the USP. So for the parenteral you have different type of container. Parenteral के लिए container अलग-अलग हो सकते हैं. Now container for parenterals may be either glass container or it may be either plastic container. Well, mostly large volume parenterals they are nowadays dispensed in the plastic container. है ना? PVC से made up होता है. Okay? And they are terminally sterile. But before that it was a glass which was used to prepare parenteral products. So you should know the types of glass we have already seen in the pharmaceutical engineering. तो ये अपने types of glass already देखा है pharmaceutical engineering में. There are 4 types. 4 type होते हैं देखो. Type 1 glass, Type 2 glass, Type 3 glass and Type 4 glass. Type 4 को अपन non parenteral बोलते हैं. So there are 4 type of glasses. है ना? Glass का type होता है 4. Type 1, Type 2, Type 3, Type 4. So यहाँ पे Type 1 को क्या बनता है देखो. Type 1, okay. So type of glass and term used क्या बोलते हैं. Type of test उसके ऊपर कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है. And then sample size क्या होगा. Limit क्या है 0.02 normal is to super and general use क्या है. Okay. So this chart is again very important. Question इसके ऊपर आता है. So a type first glass is nothing but the highly resistant borosilicate glass. क्या बोलते हैं उसको. Highly resistant borosilicate glass. Type 1 जो है वो highly resistant borosilicate glass होता है. Okay. And there are 2 tests to check the leakage from your glass. Glass जो है जो glass material है उससे जब आप autoclave करते हो जब when you subject that preparation for sterilization, during the sterilization due to extreme condition, due to heat condition, pressure condition, so there are leakage of alkali from your glass. Glass से क्या होता है alkali leakage होता है ना. So what should be the limit of that alkali leakage? That is given in the individual monograph. For that you have test. So for type 1 glass known as a highly resistant borosilicate glass, you have powdered glass test. यहाँ पे क्या है powdered glass test. मतलब क्या है जो अगर highly resistant borosilicate glass है तो उसको ये टेस्ट एप्लीकेबल है. कौन सा powdered glass test. इसमें क्या होता है भाई. इसमें 1 ग्राम आपको ग्लास लेना है. आपको पूरा पाउडर करना है उसको है ना. पाउडर करके है ना उसको ऑटोक्लेव करना है. You have to autoclave that powder with the sterile water. जो वाटर है sterile water उसमें deionized water sterile water में ऑटोक्लेव करना है और बाद में चेक करना है कि कितना अल्कली लीक हुआ है. कैसे करेंगे आप. You have to titrate that water with the 0.01 normal is to super. मतलब एक जो highly resistant borosilicate glass है जो कंटेनर है ऐसा कंटेनर 10 कंटेनर आपको लेना है. क्रश करना है उसको पाउडर करना है. 1 ग्राम पाउडर लेना है. 1 ग्राम that powder. You have to take 1 gram powder. You have to pour 10 ml of sterile water and you have to subject that solution to autoclave at 121 degrees Celsius for 15 minutes. Right?
and after autoclaving you have to withdraw that, you have to filter, you have to take water, that water, and you have to titrate against the H2 score. Now what is the limit? Okay, all sample container, okay, agar if container is made from highly resistant porous liquid glass, you have to take all sample container, crush and make a powder, take a 1 gram powder, then titrate the water after autoclave with the 0.01 normal H2 score. So what is the limit? Okay, so it should not take more than 0. It should not take more than 1 ml of your H2 score. एक ही में से ज्यादा H2 score नहीं लेना चाहिए. अगर ज्यादा लेते हैं तो मतलब ज्यादा अल्कली रिलीज होगा. जितना अल्कली रिलीज होगा उतना H2 score अल्कली के साथ में रिएक्ट होगा और आपको इंडिकेटर एंड पॉइंट दिखाएगा टाइट्रेशन में. बट अगर आपने, है ना, तो अगर वहां पे लीकेज कम है अल्कली का, मतलब ये ऑफिशियली मेरे नॉट मोर देन 1 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल H2 score. तो याद रखना है, लिमिट याद रखना है, लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास इज अ highly resistant borosilicate glass, and for that powder glass test is applicable. You have to test it for all container. Take a container, crush it, make a powder of glass, then take a 1 gram of glass, add water to it. Water should be deionized and sterile. You have to try subject that mixture with the autoclave. After autoclaving, you have to filter the powder water. You have to titrate that water against the 0.01 normal H2 score. Not more than 1 ml should be required to neutralize the alkali leached from that container. Right? So type 1 glass is used for buffered or unbuffered aqueous solution and for all other uses. Then type 2 glass को बोलते हैं अपन treated soda lime. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. What is type 2 glass? Treated soda lime glass. Treated soda lime glass. सोडा लाइम ग्लास ट्रीटेड होता है. सो ट्रीटेड सोडा लाइम मतलब सरफेस अल्कली ऑफ ग्लास इज न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये ट्रीटमेंट करते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. नाउ फॉर दिस वाटर अटैक टेस्ट इज एप्लीकेबल. वाटर अटैक टेस्ट इज एप्लीकेबल. पाउडर ग्लास टेस्ट वाटर अटैक टेस्ट में क्या डिफरेंट है? पाउडर ग्लास टेस्ट में आपको कंटेनर को लेके पाउडर करना है, कंटेनर को क्रश करना है, पाउडर करना है, बाद में उसका चेक करना है कितना अल्कली लीकेज हुआ है बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट पाउडर इनटू स्टेराइल वाटर इन ऑटोक्लेव. राइट. नाउ वाटर अटैक टेस्ट में क्या है? यू हैव टू टेक ए इंटैक्ट कंटेनर. आपको जो कंटेनर है आपका उस कंटेनर में ही वाटर भरना है. आपको कंटेनर में वाटर भरो, उसको फिलअप करके सब्जेक्ट करो. किसके लिए? ऑटोक्लेव के लिए. बाद में चेक करना है 100 कंटेनर्स और लेस इफ इट इज मोर देन 100. अगर 100 कंटेनर है, जितने कंटेनर है उतने, अगर ज्यादा है not more than 0.7 ml of 0.01 normal H2 support sulfuric acid should be required to neutralize the alkali leach on the glass. तो treated soda lime glass में क्या है कि जितना है ना, इसलिए वाटर अटैक टेस्ट एप्लीकेबल है. कभी-कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कौन से ग्लास के लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है. हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास पाउडर ग्लास टेस्ट एप्लीकेबल for treated soda lime glass type 2, that is a water attack test. Okay, so container में water आपको करना है यूज स्टेराइल वाटर और उसको सब्स्टिट्यूट करना है ऑटोक्लेव में. ऑटोक्लेव करने के बाद में वाटर लेना है, वो टाइट्रेट करना है अगेंस्ट द 0.01 नॉर्मल H2. so limit should be not more than 0.7 ml of H2. अगर 100 कंटेनर है और कम है सैंपल साइज तो उसमें 0.7 ml लिमिट होना चाहिए. अगर 100 से ज्यादा कंटेनर है तो 0.2 ml लिमिट होना चाहिए. Now it is used for dry powders, oily solutions, buffered aqueous solutions, pH less than 7. यूज भी रिवाइज करो, आपको ऑलरेडी ये हो चुका है इसमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, बट स्टिल अगेन रिवाइज करो. नेक्स्ट होता है आपका टाइप 3 ग्लास. टाइप 3 ग्लास इज नथिंग बट द Type 3 glass is the soda lime glass. Type 3 glass कौन सा है? Soda lime glass. Type 1 कौन सा है? Highly resistant borosilicate glass. Type 2 कौन सा है? Treated soda lime glass. Type 1 के लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है? Powder glass test. Type 2 के लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है? Water attack test. ठीक है, याद रखना. Type 3 क्या है? Soda lime glass. उसके लिए again powder glass test is applicable. Powder glass test.
you have to take all containers, and after subjecting the autoclave, after that not more than 8.5 ml of 0.01 normally used to support should be required to neutralize the alkali leached after autoclave. तो ये लिमिट याद रखना है. Then it is used for the dye powder and oleaginous substance solutions, मतलब oily solutions जो उसमें. Right. Next is known as a type 4 glass. Type 4 glass is known as a non-parental glass. इसके ऊपर GPAT 2023 में क्वेश्चन आ चुका है. Non-parental glass is a type 4 glass. Non-parental glass. Type 4 glass is nothing but non-parental glass, also known as a general purpose soda glass. Also known as a general purpose soda glass. So again, powder glass test is applicable. याद रखना है, powder glass test is applicable over here also. All container you have to test, and not more than 15 ml of used to support. Not more than 15 ml of 0.01 normally used to support. It is required to neutralize the alkali which is leached upon the autoclave. Okay. It is not used for parenteral. It is used for the oral tablet solution suspension, ointment, external preparation. ये समझ में आया आपको या नहीं? Are you getting or not? इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना. यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको लिस्ट कर दिए. इस टाइप सेकंड ग्लास के ऊपर 2-4 और क्वेश्चन आ चुके हैं. याद रखना है, फॉर टाइप 1 ग्लास, फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्लास powdered glass test is applicable except for type 2 glass. Type 2 glass के लिए क्या है? Water addict test. और type 2 glass water addict test is there. और type 1 glass powder glass test. Type 3 powder, type 4 powder. लिमिट भी ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. लिमिट के ऊपर लिमिट भी इम्पोर्टेंट है, उसका यूज भी इम्पोर्टेंट है. ये सब कुछ एक ही स्लाइड में. नेक्स्ट विल सी. Now for container, in the container you have glass containers, you have plastic containers, and for the glass containers you have to use rubber closure. आपने अगर पुराने जमाने के सलाइन के बोतल देखे होंगे, जब when we was kids, जब हम स्कूल में थे, तब उस टाइम पे जो सलाइन का बोतल होता था ना, वो प्लास्टिक का नहीं था. उस टाइम पे वो सलाइन का बोतल जो होता पूरा ग्लास का था. ग्लास बोतल दे यूज्ड टू. जो नॉर्मल सलाइन का लार्ज वाला बड़ा वाला, वो एक बड़ा 1 लीटर का ग्लास का बोतल आता था, है ना. तो वो बोतल यूज एंड थ्रो नहीं होता. तो वो बोतल यूज करने के बाद उनको वो रिटर्न भेज देते कंपनी फिर उससे फिर से स्टरलाइज करके फिर से ये करते थे. तो वो जो ग्लास बोतल है उसको क्लोज करने के लिए उसको तो दे यूज टू हैव रबर क्लोजर्स. सो रबर क्लोजर, व्हाट इज द रोल ऑफ रबर क्लोजर? Rubber closure, they are used to seal the opening of cartridge. They are used to seal the opening cartridge made up from rubber. Rubber may be either natural rubber or synthetic rubber or semi-synthetic rubber. Natural rubber, synthetic rubber, semi-synthetic rubber. We have already seen in the pharmaceutical engineering. So we have seen the rubber types of rubber, their additives. So ये question बहुत बार पूछा है. Vulcanizing agent used in the rubber. Vulcanizing agent used in the rubber. So sulfur is used as a vulcanizing agent in the rubber. आपको ये टेस्ट सीरीज में भी किसी ने बोला होगा. What do you mean by vulcanizing? So what do you mean by vulcanization process? So vulcanization process is nothing but the extent of polymerization. Extent of polymerization of rubber polymer in the rubber. Extent of rubber and extent of rubber is made from isoprene. Extent of polymerization. Sulfur is used for vulcanizing, for polymerization of rubber. ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीमर अगर उसमें क्रॉस लिंकिंग हुआ, sulfur is used as a vulcanizing agent to increase the cross linking between the rubber polymer in the rubber. And if there is increase in the cross linking, so there is increase in the strength and hardness. So जो रबर होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बट जो रबर स्टॉपर होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बहुत ही टफ होते हैं. They are made from vulcanizing. Vulcanization purpose, sulfur is used as a vulcanizing agent. Or also to mercaptobenzene thiazole. Okay, is an accelerator to accelerate the process. Okay. Sulfur is a vulcanizing agent. To mercaptobenzene thiazole is an accelerator. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Zinc is used as an activator. Carbon black is used as a color, or limestone is used as color or fill. Antioxidant कौन से यूज करेंगे? सल्फर, सोडियम मेटावासल्फेट. Lubricant are also added in the rubber. Two general compatibility problem आते हैं.
रबर आप जब यूज करते हो तो इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम आता है. So two general compatibility problem is there with rubber closure, namely leaching of rubber compound and subsequent reaction with the ingredient of the product. जब रबर स्टॉपर यूज करते हो आप, कभी भी रबर का इंग्रेडिएंट लीच होता है प्रोडक्ट में और उसके साथ में रिएक्ट करता है. So two general incompatibility: leaching of ingredient from the rubber compound and subsequent reaction with the product, and removal of ingredient from the product बाय रबर बाय सॉक्शन. रबर ने अगर एब्सॉर्ब कर लिया तो वो भी एक दिक्कत है. रबर कंपाउंड और बाय वेपर ट्रांसफर थ्रू क्लोजर, कभी भी रबर क्लोजर से वेपर पे ट्रांसफर हो सकता है. दैट्स व्हाई रबर क्लोजर्स आर यूजुअली washed with mechanical agitation with a hot detergent. For example, 0.5% sodium pyrophosphate, and then you have to rinse it with the water for injection. Rubber closure. Rubber closure are used to seal the opening of cartridge of your bottle. Administration device. तो इंजेक्शन जो है यूज कैसे करें? If you want to give interms to the injection device क्या रहता है? Administration set for large volume parenteral LVP के लिए तो IV सेट रहता है. LV large volume parenterals सलाइन लगना है तो पूरा IV सेट रहता है. So large volume parenterals need a intravenous administration set. In that you have hypodermic syringe, plastic irrigation solution bottle, plastic है ना, large bottle containers, transfer set and transfer उसका specification Indian Pharmacopy में दिया है, but there is no need to. Nylon and silicone rubber they are used for intravenous catheter. जो intravenous catheter होता है मतलब एक बार आपने एडमिशन ले लिया हॉस्पिटल में तो उनको बार बार सलाइन लगाने के लिए बार बार निडल नहीं यूज करेंगे. So once you got admission in the hospital, they will insert a one intracat. They will insert a one intravenous catheter. एक बार आपके वेन में कैथेटर लगा देंगे, उसको पैक कर देंगे वहाँ पे. बाद में सलाइन चेंज करना है, बस नली निकल के दूसरा सलाइन लगा के फिर से लगा देंगे. So that is an intravenous catheter. That is made from nylon or silicone rubber. Stainless steel. Stainless steel is used for hypodermic needle. Sometimes aluminum can be used for a when can be needle. Plastic containers except low density polyethylene and polystyrene. Plastic container जो होता है उसमें polyethylene and polystyrene low density नहीं, you have to use high density. Except low density polyethylene and polystyrene. Low density polyethylene polystyrene जो होता है वो atomically नहीं कर सकते. So except low density polyethylene polyethylene can be autoclaved. बाकी सभी जो प्लास्टिक है वो अटैकलेव कर सकते हैं एक्सेप्ट पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन. दे हैव बीन फॉर्मुलेटेड विद लो अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर. पॉलीइथिलीन, प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन is mostly used. High melting point range 165 degrees Celsius. Relatively low permeability for the gases and water vapors. It can withstand with the normal autoclaving temperature. ये जो प्लास्टिक है ये autoclave. Flexible polyethylene containers are used for ophthalmic solutions. Flexible polyvinyl chloride bags are used for intravenous solutions. So that's all about the containers. Container ये सब. You can see material and its structure and then rubber के लिए क्या, पहले तो प्लास्टिक के लिए क्या, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीइथिलीन लो डेंसिटी, इथिलीन मतलब है CH2, पॉली मतलब ये पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी. लो डेंसिटी मतलब इसका 0.9 के होता है हाई डेंसिटी. Autoclavable होता है क्या? Low density polyethylene is not autoclavable. High density yes it is autoclavable. So you can autoclave the polypropylene is autoclavable. Polyvinyl chloride flexible and rigid दो टाइप का होता है. So polyvinyl chloride both क्या है? Both can be autoclaved. Polycarbonate, polyamide, then polystyrene. The polystyrene is not autoclavable. इस ग्लास में सोडा लाइम ग्लास का है, ये फॉर्मूला है उसका. बोरोसिलिकेट ग्लास, रबर में ब्यूटाइल रबर होता है, नेचुरली ओपन सिलिकॉन है. पॉली आइसोप्रीन रबर. रबर तो ऑटोक्लेवेबल है, ग्लास भी ऑटोक्लेवेबल. दैट्स ऑल अबाउट द कंटेनर्स ऑफ पायरोजन टेस्ट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पायरोजन टेस्ट फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड पैरेंटल प्रोडक्ट, आपने क्या किया पैरेंटल, एम आई ऑडिबल टू यू? इफ यू हैव फॉर्मुलेटेड ए पैरेंटल प्रोडक्ट बट वो यूज करके बाद में पेशेंट में यूज किए तो उसमें क्या हो रहा है,
पेशेंट को बुखार आ रहा है. Why? Because you have prepared it, but you have not taken proper precautions, and there is a contamination of pyrogens. So sterile product must be okay. Parenteral product or injection must be sterile as well as pyrogen free. What are the pyrogens? We have seen pyrogens are nothing but the lipopolysaccharide. They are the metabolic product of your bacteria or microorganism, and they will increase the body temperature. That's why they are called as the pyrogens. How they will increase the body temperature? These pyrogens, they will go in the brain. They will interact with the COX-3, and they will increase the leukotrienes levels. That's why it increases the body temperature. So then your parenteral products or your injections must be pyrogen free. तो उसके लिए दो टेस्ट होता है. There are two tests to check the pyrogen. In vivo test. In vivo मतलब in the living system. ये लिविंग सिस्टम है, मतलब ये एनिमल्स में चेक करना है. यू हैव टू चेक pyrogens in the animals like rabbit. So in vivo test is the rabbit test or also known as a sham test. So it is based upon the measure. दूसरा टेस्ट होता है इन विट्रो टेस्ट. इन विट्रो मतलब ये यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं लगेगा, लिविंग सिस्टम इज नॉट. सो इन विट्रो टेस्ट इज नथिंग बट द लार्ड टेस्ट. लार्ड टेस्ट मतलब क्या? लिमुलस अम्बोसाइट लाइसेट. सो इट इज अ लिमुलस अम्बोसाइट लाइसेट. इट इज अ एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम हॉर्सशू क्रैब. दो टेस्ट होता है पायरोजन के लिए. एक होता है इन विवो पायरोजन टेस्ट नोन एज अ रैबिट टेस्ट. दूसरा होता है इन विट्रो नोन एज अ लार्ड टेस्ट. सो इन विवो टेस्ट मतलब क्या है? इसमें रैबिट लेना है आपको, रैबिट में चेक करना है. सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आफ्टर द इंजेक्टिंग ए सॉल्यूशन. Measurement of temperature after injecting a solution under test into the rabbit via marginal vein, not exceeding interval of 4 minutes. मतलब यहाँ पे रैबिट लेना है आपको. इनिशियली यू हैव टू टेक रैबिट जिनमें पूरा टेस्ट है. इफ यू वांट टू रीड फुल टेस्ट दैट इज गिवन इन द बुक, ओके, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन अ शॉर्ट. आपको रैबिट लेना है, उनका रेक्टल टेम्परेचर लेना है. सो यू हैव टू चेक द टेम्परेचर. मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर इज नथिंग बट द रेक्टल टेम्परेचर. रेक्टम में थर्मोमीटर डाल के आपको टेम्परेचर चेक करना है. एंड सच काइंड ऑफ रैबिट्स आर सिलेक्टेड व्हिच आर देयर इज नो difference in the temperature, not more than 0.6. 0.6 degrees Celsius से ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए. So all rabbits should be healthy and they should have uniform body temperature. That's they are selected. Now control is also taken. Simple control मतलब आपका सिर्फ सरल वाटर इंजेक्ट करना है कंट्रोल के बैच में. जैसे मान लीजिए है ना, आपने रैबिट सिलेक्ट लिए, तीन रैबिट कंट्रोल और 3 रैबिट क्या है आपका ड्रग टेस्ट करना. 3 रैबिट में आपने क्या किया? आपने सिर्फ थर्मल वाटर पर इंजेक्शन चेक किया, उनका वाटर टेम्परेचर चेक किया बाद में. पहले तो चेक किया, बाद में भी चेक करना है. आपका सोल्यूशन जो है, आपका इंजेक्शन जो है इंजेक्ट किया, उसके बाद में भी टेम्परेचर चेक करना है. सो मेजरमेंट ऑफ इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द इंजेक्टिंग ए सोल्यूशन एट अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टेस्ट. आपको जो भी ड्रग टेस्ट करना है उसका रैबिट इन द रैबिट वाया मार्जिनल वेन. मार्जिनल वेन का आप होता है उनके ईयर में होता है, ईयर में. नॉट एक्सीडिंग इंटरवल ऑफ 4 मिनट. 4 मिनट के अंदर में ही इंजेक्ट करना. मतलब आपने जितने भी रैबिट लिए, 3 रैबिट लेना, तो 4 मिनट के अंदर ही तीनों में रैबिट करना है, इंजेक्ट करना है. इंजेक्शन वॉल्यूम नॉट लेस देन 0.5, नॉट मोर देन 10 ml per kg. इंजेक्शन वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 0.5 to 10 ml per kg. Varies with the test solution. Record the temperature at each 30 minutes up to 3 hours after injecting into 3 rabbits. 3 rabbits में आपको इंजेक्ट करने के बाद में एक टेम्परेचर यू हैव टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ईच 30 मिनट. हर एक आधे घंटे में आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसका अप टू 3 आवर्स. 3 आवर्स तक आपको हर एक आधे घंटे में वो टेम्परेचर उनको मेजर करना है. टेम्परेचर किसका? रैबिट्स का. द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड. इनिशियल टेम्परेचर कितना था इंजेक्शन के पहले और बाद में कितना है. अगर बढ़ गया, so if there is increase in the temperature, that means there is a pyrogens. If there is no increase in the temperature, that means rhabit is taken. But if there is no increase in the temperature, that means your test is passed. That is a in vivo pyrogen test. Now in vitro pyrogen test, तो ये तो लैब में हो सकता है, ये तो टेस्ट ट्यूब में हो सकता है. क्या है इसमें?
There is one enzyme, limulus amiboside lysate. Limulus amiboside lysate. It is obtained from horseshoe crab. Horseshoe crab. It is known as an in vitro test or known as an endotoxin test. Now, limulus amiboside lysate test is used for detection of endotoxin. It is based upon the clotting reaction of horseshoe crab lysate and endotoxin. हॉर्सशू क्रैब लाइसेस जो होता है एंजाइम, अगर आपके प्रिपरेशन में एंटीटॉक्सिन है तो वो क्या करेगा, ये टेस्ट में कोएगुलेशन दिखाएगा. अगर आपके सॉल्यूशन में एंटीटॉक्सिन नहीं है तो वो कोएगुलेशन नहीं दिखाएगा. लिमिटेड limulus amiboside lysate test is for the detection of endotoxin that is based upon the clotting reaction between horseshoe crab and endotoxin. Specimen is incubated with limulus amiboside lysate and check the sensitivity. मतलब क्या है कि आपका प्रिपरेशन जो सॉल्यूशन अंडर टेस्टिंग है उसमें limulus amiboside lysate आपको डालना है और उसको इंक्यूबेट करना है. You have to check formation of gel clot is nothing but the positive test for endotoxin, and it is a highly sensitive test. There is a high sensitivity, even 0.005 endotoxin unit per ml that can be checked. Drawback क्या है इसका? It can give false positive test with the glucon. If your preparation consists of glucon है अगर आपके प्रिपरेशन में कभी-कभी उससे false positive test दे सकता है. False positive test मतलब क्या? आपके प्रिपरेशन में एंडोटॉक्सिन नहीं है फिर भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है. क्यों? क्योंकि आपके प्रिपरेशन में ग्लूकॉन है. फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट. दिस टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. देन टाइप्स ऑफ लाल टेस्ट. कितने टेस्ट होते हैं लाल के? टाइप्स ऑफ limulus amiboside lysate test. So equipment used for the test must be free from endotoxin. During the test जो equipment यूज कर रहे हो उसमें कोई endotoxin नहीं होना चाहिए. Different methods for LAL are different. A gel clot method is there, then turbidimetric method is there, then colorimetric method is there. तो जब लाल जो limulus amiboside lysate है और आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कोएगुलेशन होता है तो जेल फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर टर्बिडिटी हो सकती है, या फिर कलर चेंज हो सकता है. That's why a gel clot method is there, turbidimetric method is there, and colorimetric method is there. These three are the types of लाल टेस्ट. लाल के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है which is in vitro टेस्ट कौन सा है? एंडोटॉक्सिन टेस्ट और लाल टेस्ट. इन विवो कौन सा है? इन विवो इज नथिंग बट रैबिट टेस्ट और शाम टेस्ट. याद रखना है आपको इसका. ह्यूमन होल ब्लड प्लाज्मा टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट है आपका ह्यूमन होल ब्लड. पैराजन्स इंक्लूड ह्यूमन. ओके. पैराजन्स इंड्यूसेस ह्यूमन मोनोसाइट to release the inflammatory chemicals like cytokinins and interleukin. तो जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड सेल मोनोसाइट्स type of WAC. So these pathogens they will induce the release of cytokinins interleukins from monocytes. The test involves the incubation of whole blood or a culture line of human blood, analysis of specific cytokinins after a specific time. Human whole blood test भी होता है पॉइजन के लिए ह्यूमन होल ब्लड टेस्ट में क्या करना है कि इसका एक बेसिक होता है. बेसिक क्या है कि जब पैराजन आपके बॉडी में जाते हैं तो RWBC जो होता है उसमें मोनोसाइट जो होते हैं मोनोसाइट में से क्या रिलीज करते हैं? इंटरलूकिन साइटोकाइनिन. तो उनका ऐसे करना है आपको. यू हैव टू इंक्यूबेट योर होल ब्लड विद द सैंपल एंड ऐसे फॉर साइटोकाइनिन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम. दैट इज अ ह्यूमन होल ब्लड टेस्ट. देन दूसरा टेस्ट है एडवांस टेस्ट. Advanced test for endotoxin. Advanced test for checking the pathogens known as endolysis. So that is the first commercially available solid phase-based method for endotoxin detection. Use of recombinant factor C with the progenitor substrate detection. That is for detection of endotoxin. Detection of endotoxin. ये टेस्ट होता है. रैबिट टेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. रैबिट के रेक्टल टेम्परेचर आपको लेना है. रेक्टल टेम्परेचर इज द मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर. याद रखना है मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर कौन सा होता है? आपके माउथ में का नहीं, आपके बगल में का नहीं, आपके माउथ में का नहीं, आपके अंडर आर्म्स का है. रेक्टल टेम्परेचर इज द मोस्ट एक्यूरेट. रेक्टल टेम्परेचर इज द मोस्ट एक्यूरेट. टाइप्स ऑफ पेरेंटल फॉर्मुलेशन. पेरेंटल
जो फॉर्मुलेशन उसमें टाइप कितने हैं? So parenteral formulation, types of parenteral formulation. So first one is a freeze dried product. Freeze dried product. तो types of parenteral formulation में क्या है कि parenteral formulation में भी solution, it may be a suspension, it may be a emulsion, it may be a solid. तो solid हो सकता है या फिर solution हो सकता है, suspension हो सकता है या फिर आपका emulsion हो सकता है. Right? So these are the types of parenteral formulation. So dry solid for reconstitution, then आपका solution, then suspension, then emulsion. इतने सारे type हो सकते हैं. So first is a freeze dried product. Freeze dried parenteral product. Okay. The percentage of solid content should be between 2 to 25%. So percentage of solid content between a freeze dried product should be 2 to 25%. Solid content limit याद रखना. Among the best salt forming, uniform size, uniform color and texture, physical strength, rapid reconstruction. So देखो, among the best salt. So in the freeze dried product, the salts are used. Salt use करते हैं उसमें, salt use करते हैं to get a uniform crystal size, uniform color, texture, physical strength and rapid reconstruction. They are nothing but the monobasic and dibasic calcium. Question एक बार आ चुका है देखो. एक क्वेश्चन आया था most commonly used diluent in the freeze dried parenteral product. Freeze dried parenteral product. तो इसमें most commonly used diluent कौन सा होता है? Most commonly used diluent in the freeze dried parenteral product कौन सा है? Monobasic and dibasic सोडियम फॉस्फेट. तो ऑप्शन में क्या आंसर? ऑप्शन में दिया था कि सोडियम क्लोराइड, मैनेटॉल, है ना, ये कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, मैनेटॉल, मोनोबेसिक एंड डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट. तो याद रखना ये आंसर है, मोनोबेसिक एंड सोडियम, मोनोबेसिक एंड डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट. तो सोडियम क्लोराइड नहीं है. सो इफ यू यूज सोडियम क्लोराइड इन द फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट, तो सोडियम क्लोराइड फ्रीज ड्राइड में यूज किया, क्या होता है मालूम है आपको? सोडियम क्लोराइड विल कॉज, है ना, will cause cracking problem for them. एक प्रॉब्लम होता है. Sodium chloride is often used, but when used alone tends to shrink markedly and in a volume and appears as a crusty or crumbly. Sodium chloride भी use करते हैं, लेकिन if sodium chloride is used, it tends to shrink in the volume and appears to be crusty or crumbly. Sodium chloride नहीं use करना है. What is the answer then? Sodium, dibasic sodium phosphate and monobasic sodium phosphate. When organic substances like mannitol, sorbitol, sucrose, gelatin, they are used as a diluent to provide a solid to provide a solid for cake. You have to take care. Care must be taken during heating, during terminal stage of drying, to avoid the discoloration of cake by charging. मतलब डाइल्यूएंट यूज करना है फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट में, कौन सा यूज कर सकते हैं आप? मोनोबेसिक, डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, मेंटॉल, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज, जिलेटिन. तो हर एक का एक अपना है. मोस्ट कॉमनली यूज होता है सोडियम, ये डाइबेसिक एंड मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट. सोडियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है, लेकिन when sodium chloride is used, it will shrink in the volume and appear as a crusty or curly. Then mannitol, sorbitol, sucrose, gelatin, that can be used, but you have to take care while eating, color change ना हो जाए, to avoid the discoloration of cake by charging. Ophthalmic preparation, they are nothing but then they should be isotonic and pyrogen-free. Should be isotonic and pyrogen-free. आइस में यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट. तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आई ड्रॉप हो सकता है, आइस ड्रॉप. उसके बाद आई ऑइंटमेंट हो सकता है, आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, है ना. आइस इरिगेटिंग सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर उसमें लेंसेज भी आते हैं. सो ऑप्थेल्मिक में, सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. सो आइस कैन टॉलरेट द pH from 6.5 to 8. Then depot preparation or long acting preparation. So long acting parenteral preparation क्या आएगा? Dissolution controlled depot formation. Dissolution controlled depot formation. So formation of drug salt with a very low water solubility. पहला तो ये पढ़े how you can formulate
deeper preparation, formation of drug with a low water solubility. One can be one of the most common approach of this type of formulation. So most commonly आपको approach क्या है कि if you want to increase the duration of action of parenteral product, so हमें salt with the drug which are having low solubility, जो ड्रग का सॉल्ट बनेगा वो उसके सॉल्बिलिटी कम है तो धीरे धीरे चलो, so it will increase the duration of action. Long acting parenteral preparation, dissolution, control deeper formulation and most common approach क्या है, formation of drug with salt with a low water solubility. Second approach क्या है, binding of drug molecule to adsorbent. Third approach क्या है, esterification of drug, ester should be biodegradable. आप ड्रग के साथ में esterification कर सकते हो, but that ester should be biodegradable, वो मेटाबोलाइज होना चाहिए बॉडी में. Fourth approach क्या है, encapsulation of drug with the biodegradable or bioabsorbable molecule like gelatin, phospholipid or long chain fatty acid. So they are nothing but the deeper preparation. सेकंड आता है पेरेंटल सस्पेंशन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. इन केस ऑफ पेरेंटल सस्पेंशन सॉलिड कंटेंट लिमिट कितना होना चाहिए? सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट इन द पेरेंटल सस्पेंशन, so it is usually between 0.5 to 5% or it may go up to 30% in some antibiotics. तो मतलब आप लिख सकते हो 0.2 to 5% but may go up to 30% in case of antibiotic preparation. Parenteral suspension should have a small uniform particle size and good syringeability. Syringeability मतलब क्या है? सस्पेंशन है अगर बॉटल में तो उसमें सिरिंज से भी बाहर देना चाहिए. So should have good syringeability and rheological property. Suspensions are stabilized by polysorbate less thin or enol for EL620 और plutonic EF64 surfactant. इस surfactant के नाम है. So this suspension is stabilized by surfactant. Polysorbate less thin और ML for EL620, plutonic EF64 like this. Sometimes sodium carboxymethyl cellulose and it may increase the effect of surfactant. So, sometimes sodium carboxymethyl cellulose भी use कर सकते. So parenteral suspension में क्वेश्चन आ चुका है. The solid content in the parenteral suspension 0.5 to 5%, but it may go up to 30%. Parenteral emulsion, main formulation problem क्या होगा emulsion का? To maintain an uniform droplet size, that is a 1 to 5 micron. तो याद रखना है parenteral emulsion का particle globule size कितना होता है? Globule size 1 to 5 micron. Oxylene, okay, oxyethylene, oxypropylene 0.3% less than 1.2%. They are used as emulsifier for emulsion of cotton seed oil and dextrose purposes. Cotton seed oil 15% use करते हैं. Stability is again major problem with the parenteral emulsion. So it should be stable during the autoclaving. Autoclaving में stable होना चाहिए, तो break नहीं होना चाहिए. Gelatin, dextran and other cellulose, they are found to be help in the stabilizing effect. Parenteral suspension, parenteral emulsion. Effect of route of administration on a formulation. Route of administration का क्या effect है on a formulation? So route of administration and volume of injection is important. So है ना? So intracutaneous you can inject more than 0.2 ml. Rarely used. It is rarely intracutaneous more than 0.25%, 2.22 ml is rarely used. मतलब intracutaneously 0.2 ml से ज़्यादा आप देते नहीं हो. Intracutaneous. Subcutaneous rarely. Okay. Subcutaneously you can inject 1 ml, 1 to 2 ml or less. Intramuscularly you can inject 2 or 10 ml. 10 ml can be given by intraspinally. Intravenously large volume up to several liters. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. All parenteral preparation must be isotonic. Isotonicity is a characteristic that is probably greatest important for the intraspinal injection because of the circulation of cerebrospinal fluid is low.
and disturbance of osmotic pressure of CSF. It can easily quickly cause headache and vomiting. तो CSF मतलब इंट्रा स्पाइनल या इंट्राथिकल इंजेक्शन जो है उसमें तो आइसोटोनिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, थोड़ा बहुत भी आइसो osmotic प्रॉपर्टी चेंज हो गया आपका सेंटर स्पाइनल फ्लूइड का, तो आपको इमीडिएटली वोमिटिंग चालू हो जाए.